Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 6th September. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Singapore's Prime Minister's visit to India. Then we will be talking about digital hallmarking system that has been introduced for the silver jewelry with HUID number. Then Health AI GRN has been launched recently and India has joined this. Then Ashwini Vaishnav has inaugurated TDK's lithium-ion battery plant in Haryana. All these things and many more will be discussed in this video, students. So stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So let's start with national affairs. The first question that will be asked is, name the Prime Minister of Singapore who was on a visit to India recently from 2nd to 4th of September. So Lawrence Wong, as you can see him in the picture here, Lawrence Wong, he is the Prime Minister of Singapore who was on a visit to India recently, right? And it marks the 60th anniversary of diplomatic relation between India and Singapore here, right? During this meeting, adoption of CSP was seen. CSP is your comprehensive strategic partnership. This will enhance the cooperation between India and Singapore. It will enhance the trade and relation between India and Singapore, and focus here of this CSP will be on 8 pillars. What are the pillars that we are talking about? Skill development, digitalization, innovation, sustainability, connectivity, healthcare and medicine, cultural exchange, defense, security, and many more. Then apart from this, 5 memorandum of understandings were also signed here, right? So if we see here, what are the things we are talking about? Adoption of CSP, 5 MOUs, and inauguration of the PSA Mumbai Phase 2, right? Very important, students. Here you can see adoption of CSP, and that is your roadmap for the comprehensive strategic partnership focused on 8 pillars. These are the 8 pillars. Then economic cooperation was focused about, skill development and education was focused about here, right? Then healthcare sector was focused about, sustainability, connectivity, cultural exchange, defense, security. Then a part of this, 5 MOUs were signed. These are the sectors where these MOUs were signed, right? And also Singapore's Prime Minister Lawrence Wong, he visited Rajghat and paid tribute to Mahatma Gandhi there. Moving on, next we are talking about that recently Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, they have introduced digital hallmarking system for the silver jewelry with HUID, and it is voluntarily hallmarking for silver jewelry and articles. They will enhance the HUID system to ensure purity, the purity verification for silver jewelries, because we have seen that the price of silver is also increasing very much, as gold is also increasing right now. Gold is at their all-time high right now. So this digital hallmarking system for silver jewelry has been launched with HUID number, and it started from 1st of September 2025. The initiative aims to strengthen the consumer rights, ensure transparency, and prevent malpractices in the silver jewelry system, right? And here, remember one thing, that this hallmark components, it is the BIS that consists of a BIS standard mark with the word silver, purity grade, and HUID code, that is a 6-digit alphanumeric code, right? So take a note of this. If we further talk about standards here, these are the standard. This is the standard that will replace the standard. Purity grades, these are the purity grades, and 958 and 999, these are the 2 new added for the silver, correct? So take a note of this, and there will be a verification tool also, that is the BIS Care mobile application, on which if you put your HUID number, that is this 6-digit alphanumeric code, this will give you about the insight about the purity of that particular jewelry or that particular gold or silver. In this case, silver. Next is our country has joined India AI GRN to strengthen the oversight of AI in the healthcare. Students, AI is a game changer, right? This increases the process of research and development at a very large scale. Earlier, without AI, if we used to do research and development, it might take years
for the problems to be solved. But with the help of AI and launch of the quantum system, supercomputers, right, quantum computers, we are seeing that the research is going at a tremendous pace and years of works can be completed in just the matter of days. So in coming future we will be seeing that with the help of AI the healthcare will be improving, right? Even recently during the SEO summit there has been a clip released where China and Russia, correct? From China, Xi Jinping and Russia's Vladimir Putin, they have been seen talking about that how can we enhance the life or how can we enhance the living years, right? And they talked about that 150 years will be the new normal in this decade that we will be seeing. And as of now, also 70 years is just we likes a younger self, right? That they are young only, and both of them they are almost 72 years of age right now and still they feel young. They were talking about organ transplant which have made the extending the life of humans beyond 100, and now they are talking about that they can achieve 150 also, right? So similarly all these things can be done with the help of AI, right? Because with this the research and development will be taking at a tremendous pace. Right, students? So India has joined Health AI GRN, that is your a global agency for responsible AI in health, and this GRN stands for Global Regulatory Network. The aim here is to strengthen the governance and oversight of AI in the healthcare sector. Correct? And who is the India representative? This is an India AI. Existing members UK and Singapore, and to strengthen governance and oversight of AI in the healthcare sector. Here you will be seeing these organizations will be sharing knowledge with each other, right? Doing research and development, student exchange programs, researchers exchange programs will be carried out. Next, Ashwini Vaishnav inaugurated TDK's lithium ion battery plant in Haryana. Lithium ion, what is this? This is a critical mineral, students, right? And where it is used, this lithium ion is used in the battery, correct? And nowadays we are seeing that electric vehicles are gaining prominence, and these electric vehicles the battery will be a major component, right? Even this is the reason that China is growing. Why? Because they hold almost 90% of the lithium ion refining, right? Because we have lithium resources, but in order to use them in electric vehicles battery, they need to be refined, and the process for refining is held by China. They are controlling 90% of it globally. Correct? So another thing that we need to understand is that though we have critical minerals, their refining process, right, is also critical, and we need to have the technology for the same. So recently Ashwini Vaishnav they inaugurated this lithium ion battery plant, and where is this? This is in Sona, Haryana. This facility was set up with an initial investment of 3000 crore rupees under the government of India's electronic manufacturing scheme, right? And 20 crore battery packs will be developed here annually. That means here lithium ion batteries will be made. Production will be starting here at this plant. Next is Union Minister Manohar Lal Khattar has launched Unified RERA portal in New Delhi. Manohar Khattar, our Union Minister of Housing and Urban Affairs and Ministry of Power, has launched this Unified Real Estate Regulation and Development Act of 2016, that is RERA portal, during the 5th meeting of the Central Advisory Council at the Sankalp Bhavan in New Delhi. Right? When it was launched? During the 5th meeting of the Central Advisory Council. And this RERA portal, this is a centralized digital portal that has been defined or designed to unify all the state level RERA system, right? This will enhance transparency, it will enhance accountability, and it will empower the buyers and facilitate best practices that will streamline the grievance redressal. Next is banking and finance. Highlights of the 56th GST Council meeting that was held in New Delhi. Students, 2 new tax slabs has been introduced. They are 8 and 12%. Earlier 4 slabs they were removed. That is 5, 12, 18 and 28. They have been removed now, right? And what has been introduced? 8 and 12% has been introduced. Apart from this, addition from this new tax structure, the council has also introduced additional slab, that is a special demerit rate of 40% on the selected items, that includes your tobacco, and on luxury items a state 40% slab has been introduced. These new tax slabs they will be coming into effect from 22nd September, right? Except tobacco and tobacco related product, as they will be specified by the Ministry of Finance.
So coming back, two new slabs, 5%, 18% has been introduced, and it will be replacing the existing 5, 12, 18 and 28, and a special 40% slab for tobacco and luxury items. If we see here some products such as your dairy products, butter, ghee, cheese, condensed milk and other dry nuts, they have been now shifted from 12% to 5%. Whereas ultra high temperature milk, pre-packed and labeled chana or paneer will be from 5%. This won't have any tax now. Then food items such as your packaged namkeens, bhujia, sauces, pasta, chocolates, coffee, processed meats and other, where the tax level was from 12 to 18%, has now been reduced to 5%. Whereas if we talk about cars and two-wheelers under 350cc, the tax on them has been reduced from 28% to 18%. Whereas for buses, trucks, three-wheelers and all auto parts, tax from 28% to 18%. Whereas if we see about ACs, TVs, right, above 32-inch including both LED and LCD, they have been, the tax on them has been removed from 28 to 18%. See, one of the big thing what will be happening now is, as the tax are reduced, the money in hand of the people will increase, which in turns will enhance the spending power of the people, and as the spending power increase, we will be seeing that the markets will be growing, right? The retail sector will be booming with the help of these GST rates cuts. Very important. Then next, NPCI, they have raised UPI transaction limit to 5 lakh rupees and cumulative limit for 24 hours up to 10 lakh rupees. NPCI, we all know, right, they launched this UPI, and earlier there was a limit of 1 lakh rupees also. Now NPCI, they have increased the transaction limit to 5 lakh rupees only for those categories that align with the tax payment. In addition to that, NPCI has raised per transaction limit and aggregate transaction limit for 24 hours to 10 lakh rupees or for 12 categories. And these new transaction will be starting, this will be coming into effect from 15th of September. Take a note of this. And categories come under 5 lakh rupees per transaction includes capital markets, insurance, collections, travel and other. If we talk about NPCI, it is the apex body that regulates the retail payment and settlement system in India. Who is the managing director and chief executive officer of NPCI? Dilip SP. Headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in the year 2008. Next, here you can see the increased limit here also, right? And cumulative limit also. Next is Bandhan Asset Management Company. They have received the SEBI approval to launch Arudha SIF platform. SIF is your specialized investment fund platform that has been announced, and the new range of products under Anuradha SIF platform has also been launched. Right? Take a note of this. So Bandhan AMC, they received the approval to launch this SIF platform. What is the name of the platform? It is Anuradha SIF, and here it will be offering equity, debt, hybrid and unhedged short derivatives. Correct? Also, the aim here is to, this SIF was introduced by SEBI basically to bridge the gap between the mutual funds and the portfolio management services. Next is appointments and resignation. AMFI, they have elected Sandeep Sikka as chairman and Vishal Kapoor as the vice chairman here. I repeat, Association of the Mutual Fund in India has elected Sandeep Sikka as the chairman, whereas Vishal Kapoor has been appointed as the vice chairman here. Who they will be succeeding? Sandeep Sikka will be succeeding Navneet Munot, and Vishal Kapoor succeeded Anthony Heradia. Correct? And this was during the 30th annual general meeting of AMFI, Association of the Mutual Fund in India. Moving on, students. Next is ACC has approved the appointment of Bhupendra Gupta as the chairman and managing director of NHPC. Correct? So for NHPC, who has been appointed as the CMD, chairman and managing director? Bhupendra Gupta, and he will be succeeding Raj Kumar Chaudhary. Right? He retired on 30th of June 2025. Right? Take a note of it. Next is Levi's appointed Alia Bhatt as their new global brand ambassador. We all know about Levi's. It is an American denim brand, and appointed famous actress Alia Bhatt as their new brand ambassador. Next, if we talk about Obituary, renowned Italian fashion designer Giorgio Armani has passed away at the age of 91. Armani brand is very famous, and this is an Italian fashion designer and billionaire. Giorgio Armani has recently passed away at the age of 91. Right? And he founded this Armani brand in 1975.
Right, students? Next is books and authors. Arundhati Roy has launched her memoir, that is Mother Mary Comes to Me. This was launched in Kerala, launched by Arundhati Roy, an Indian author and activist. And Mother Mary Comes to Me, this was her first memoir that was launched here at St. Teresa College. And it has been organized, event was organized by Penguin Random House India and DC Books in Kochi, Kerala. Also, she won the Booker Prize for The God of Small Things in 1997. Very famous book. This book became a sensation at that time. Next is important is National Teachers Day, observed on 5th of September. It is observed on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and this day is to honor all the teachers. Correct? And this day it marks the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first vice president and second president of India. Correct? And he became the president in 1962. Also, remember, this day was first celebrated in 1962 on 5th of September. Right? Apart from this, he was honored with multiple awards. Right? For example, he was honored with the Royal Order of Merit in 1963. Then Bharat Ratna in 1954 for his contribution to public affairs. Right? So, in order to honor him on his birthday, we observe this day, that is National Teachers Day. Then is your International Day of Charity, observed on 5th September only. This day is to honor, to highlight the significance of the charitable work and humanitarian efforts in tackling the global social and economic challenges. This day is also commemorating the anniversary of the passing, that is the death of Mother Teresa. Right? The word charity comes from the Latin word that means love and caring for all. Correct? So on the day of the demise of Mother Teresa, we observe this day, that was on 5th of September only, observed by UN and first observed in 2013. Correct? And Mother Teresa was also honored with Nobel Prize in 1979 and Bharat Ratna in 1980. Then is state news, students. Andhra Pradesh cabinet has approved universal health insurance and various new projects here. Right? And they have been introduced under the hybrid model by integrating Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Dr. NTR Vaidya Seva Trust. This scheme will issue a request for proposal to issue companies for implementation. Here you will be seeing universal health insurance integrating these two schemes. Coverage here for BPL 25 lakh rupees, for APL 5 lakh rupees. Medical colleges have been approved 10 under the PPP model, triple P model, that is public private partnership model. And electronic sector here 856 crore rupees incentives has been provided to establish India's largest PCB plant. Take a note of this too also, students. What is PCB? Printed Circuit Board Plant. Right? This will strengthen the Andhra Pradesh electronic manufacturing ecosystem. Multiple energy projects are also coming. Water supply projects are also coming. If we talk about Andhra Pradesh, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh? And Chandrababu Naidu. Right? And capital Amravati. That is now being transformed into the green city and the city of future also, this is being talked about. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be very beneficial for you all, and then we'll proceed to the homework section. Next, in August, where did multilateral exercise, that is exercise Bright Star, held, which saw the participation of more than 700 personnel from the Indian Armed Forces and the Headquarter Integrated Defence Staff. So, where did the multilateral exercise Bright Star took part or was held? It was held in Egypt. Next, identify the bank which signed an MOU with National Small Industries Corporation, that is NSIC, to enhance the credit access for MSMEs, aiming to enhance the access to comprehensive financial and digital solutions. So identify the bank which signed this MOU here. It is IndusInd Bank. Which is it? It is IndusInd Bank. Next, Government of India appointed Goldman Sachs as the sole transaction advisor for the divestment stake of 4 public sector banks. Which are these banks? Indian Overseas Bank, Central Bank of India, UCO Bank and Punjab and Sindh Bank. Next, what type of license was granted to Aditya Birla Digital Limited by RBI in August 25? So, what type of license was granted? It is your payment aggregator license. Option 3 is right here.
right? This payment aggregator license, as a licensed payment aggregator, here Aditya Birla Capital Digital Limited, they will empower the merchants and e-commerce platforms to securely accept and process online payment. That means they can receive and send payments to the merchants. Next, identify the bank that partnered with Bharat Pay in August to launch India's first EMI driven credit card, which will operate on the RuPay network. So which is that? It is your Unity Small Finance Bank, and it will be operating on which network? It will be on the RuPay network. Next, according to the August 2025 issue of the EY Economy Watch released by EY, that is Ernst and Young in August, India could become the world's second largest economy in terms of purchasing power parity by which year? It will be by the year 2038, right? And it is an estimated that by 2038 GDP in terms of purchasing power parity will be $34.2 trillion. Next, identify the correct statement regarding the Professional Footballers Association Award announced by August. So, if we look at the option here, all these three options are rightly mentioned. Next, who was appointed as the new Deputy National Security Advisor by the Government of India? So, who was appointed as the new Deputy National Security Advisor? So, Anish Dayal. Take a note of this. He has been appointed here as the Deputy National Security Advisor, and he will be reporting to whom? National Security Advisor Ajit Doval. Next, who was appointed as the new Vice President and Chief Risk Officer of the New Development Bank for a period of 5 years? So Dr. Rajiv Ranjan, right, was appointed as the new Vice President and Chief Risk Officer of the New Development Bank for a period of 5 years. Take a note of this, students, right? And he is expected to assume his role at the New Development Bank in September 2025. Next, for a period of how many years was renowned economist Dr. Urjit Patel appointed as the Executive Director representing India at IMF by ECC? So, for a period of how many years was renowned economist Dr. Urjit Patel appointed? So, he was appointed for 3 years. Next is who assumed the charge as the interim president of BCCI in August after Roger Binney stepped down, as the age limit here is 70, right? And he just achieved the age of 70. So Rajiv Shukla, right? He assumed the charge as the interim president of BCCI, right? After Roger Binney stepped down from the position. Next is Sumitomo Mitsui Banking Corporation, that is SMBC of Japan. They have received the approval from RBI to acquire up to how much percent paid up capital and voting rights in Yes Bank? So they have been granted to have 24.99%. Correct? They can acquire this much share paid up share capital and voting rights in Yes Bank. Correct? And this approval is valid for 1 year. Next, in August, where did DRDO? They successfully conducted the maiden flight test of integrated air defense weapon system. So where did they recently conducted their maiden flight test? It was in Odisha at ITR Chandipur of the coast of Odisha. This was tested. Next, ISRO, they successfully conducted the first integrated airdrop test. It was of the crew module recovery system as a part of India's first human spaceflight program, that is Gaganyaan mission in Sriharikota, Andhra Pradesh. This is the location where this was tested. Correct? Take a note of this, students. And this system, it is basically a kind of a parachute, right, where it will be dropped and this will be tested whether the drop was up to the mark or not. Focus will be on the safe landing of the crew. Next, in August, Indian Navy, they have commissioned 2 state-of-the-art stealth frigates, that is Indian naval ship Udyagiri and INS Himgiri. They were commissioned in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Both Udyagiri and Himgiri, they are the variants of which class frigate? They are the variants of the Project 17 Shivalik class frigate. Right? Udyagiri, it is the second ship of the Project 17A, and INS Himgiri is the third variant of the Project 17A. Right? The next question can be asked that
Udyagiri was developed by whom? Udyagiri, that is the second one, developed by Madgaon Dock Shipbuilders Limited, and INS Himgiri developed by GRSE, that is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Next, mention the name of the country that launched their advanced Jupiter space camera aboard the NAOS satellite, that is National Advanced Optical System satellite, in August. So mention the name of the country. It is Israel. It is Israel. And it was launched using Falcon 9 rocket of SpaceX. Next, in August, where did India host the Asian Short Track Speed Skating Trophy 2025 for the first time, the biggest international winter sport event? So, where did India host the Asian Short Track Speed Skating Trophy event? It was held in Uttarakhand. Next, and one more thing, this was hosted by whom? Who hosted or who organized it? It was organized by India, or not hosted, right option will be organized by whom? By Ice Skating Association of India, ISAI. Next, veteran Indian cricketer Chiteshwar Arvind Pujara, who announced his retirement from all the forms of Indian cricket in August, holds the record for 525 balls faced by an Indian in a test inning. That is the most balls faced by an Indian. Then he also represented India in 103 test matches where he scored 7,195 runs. Right? He also played 5 ODIs, one day internationals, for India. He was awarded with the Emerging Cricketer of the Year 2013 by ICC. Moving on. Pick out the incorrect statement regarding Khelo India Water Sports Festival organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports in August month. If we look at here, we have to find the incorrect statement. All are right except option B, that is the official mascot of the event was a snow leopard. Is it so? No, it was not a snow leopard, but it was a Himalayan kingfisher. Himalayan kingfisher. And this Himalayan kingfisher, right, is the mascot here. If asked about the logo, it is a logo of a Dal Lake in which there is a shikara. Right, that is the houseboat. Correct? This is the logo here. So right, rest all the options are rightly mentioned. And this is the inaugural edition, that means the first edition. Next, the International Chess Federation officially declared which state as the host city for FIDE World Cup scheduled in November 2025. So FIDE officially declared which state as the host city. It is Goa that was declared as the host city. Also, the biennial knockout tournament will feature 206 players, right, for a prize pool of $2 million. Next, Julian Weber, representing which country, finished first in the Diamond League of the javelin throw that was held in Zurich, Switzerland in August, where Indian Olympic medalist Neeraj Chopra finished second. So it is Germany, right? Julian Weber is from Germany and he secured the first position, whereas Neeraj Chopra secured second position here with a throw of 85.01 meters. Julian Weber's throw was 91.57 meters. Next, National Space Day is observed across India on 23rd of August to honor the historic success of ISRO's which mission? It was of ISRO's Chandrayaan 3 mission and successful deployment of Pragyan rover. Correct? Take a note of this. There is a theme here also. Theme being Aryabhatta to Gaganyaan, ancient wisdom to infinite possibilities. And this year it was the second edition of this day. Then it comes National Sports Day, also known as the Rashtriya Khel Divas, annually observed on 29th of August to commemorate the birth anniversary of Dhyan Chand Singh. Right, he was a legendary Indian sports player, and to honor his birth anniversary, we observed this day as Rashtriya Khel Divas or National Sports Day. And this year it was the 14th edition of the National Sports Day that was observed. Then is your India observed the National Small Industry Day on 30th of August to recognize the pivotal role of MSMEs in economic growth, employment generation and inclusive development. In which year did Prime Minister Atal Bihari Vajpayee announce the comprehensive policy package for SSIs, that is small scale industries, during the first national conference on SSI? Right? So question asked is in which year? It was the year 2000. Right? And this year was first observed in 2001. Next, who is the chairman and chief executive officer of Edelweiss Financial Service Limited as of August 2025? So, Rashesh Shah is the chairman and chief executive officer of Edelweiss Financial Service Limited as of August 2025. Take a note of it.
Moving on, in August, which two state governments agreed to carry out all future activities, including plantation, jointly in the disputed area belt along their inter-state border? So it is Nagaland and Assam, right? These two states agreed to carry out all future activities, including plantation, jointly in the disputed area belt along their interstate border. Next, as per the Ministry of Commerce and Industry, what was the value of India's seafood exports in FY25? So, India's seafood exports stood at $7.45 billion. Next, name the cricket museum that was inaugurated by Mumbai Cricket Association in August at Wankhede Stadium in Mumbai. So, name that cricket museum. It is Sharad Pawar Cricket Museum that was inaugurated in Wankhede, Mumbai, Maharashtra. Next, identify the platform partnered with Canara HSBC Life Insurance Company in August to launch the EZ pension plan. It is policybazaar.com. This is the platform that is partnered with Canara HSBC Life Insurance. Next, which district administration launched Bal Mitra campaign in August to reconnect school dropout children with their formal education system? So it is Dantewada of Chhattisgarh. This is the district administration of Dantewada that has launched this Bal Mitra campaign in August, right? It is for school to reconnect the school dropout children between the age of 6 to 14 years of age with the formal education, right? Take a note of it. Also, young graduates or the college students will serve as the fellows here. Also here they will be receiving of 6,000 rupees, right? And a training to improve their leadership and communication skill. Next, mention the country that recorded over $100 billion trade with India in FY25, with India's cumulative investment exceeding $75 billion between 1996 and 2024. So it was with Africa. Next is our homework section, students. First question, which country recently joined the IBCA, International Big Cat Alliance? Second question, tell me recently Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed how many years? Third question, tell me recently no helmet, no fuel. This was implemented in which state initially, from which date? Fourth question, recently which state became the first state to implement the Supreme Court order on stray dogs? Which is that? And what was the order? Do let me know that also. Fifth question, tell me recently India UN World Food Program, they have signed a pact to supply what amount of what material for global humanitarian aid. Correct? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर की, लॉरेंस वोंग। ये अभी इंडिया के विजिट पे थे। देन अभी रिसेंटली डिजिटल हॉल मार्किंग सिस्टम लाया गया सिल्वर ज्वेलरी के लिए विद HUID नंबर, जो कि 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। देन हेल्थ AIGRN को अभी ज्वाइन किया है इंडिया ने। देन हम बात करेंगे TDD के लिथियम आयन बैटरी प्लांट की, जो कि हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया, हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एंड मैनी मोर, तो एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये भी इंडिया के विजिट पे थे एंड 60th डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी थी हमारी इंडिया और सिंगापुर की, राइट। देन इसी के अलावा यहाँ पे रोड मैप फॉर CSP इसको अडॉप्ट किया गया, राइट। अडॉप्शन ऑफ CSP, दैट इज योर रोड मैप फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को बढ़ावा देगा बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। यहीं पे 8 पिलर्स के ऊपर बात की गई, जैसे एजुकेशन,
innovation, sustainability, connectivity, healthcare, cultural exchange, defense security and many other. इसी के अलावा 5 MOU भी यहाँ पे साइन किए गए हैं इन वेरियस सेक्टर्स, जहाँ पे हम डिजिटल एसेट इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के बारे में काम करेंगे, सिविल एविएशन सेक्टर, स्पेस सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडॉप्शन ऑफ CSP, 5 MOUs एंड इंटीग्रेशन ऑफ PSA मुंबई फेज 2, इनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। ये आप वो 8 पिलर देख सकते हैं, रोड मैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट। देन 5 MOUs, यहाँ पर ये वो 5 MOUs के ऊपर काम किया जाएगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल हॉलमार्किंग सिस्टम को फॉर सिल्वर ज्वेलरी विद HUID नंबर। ये HUID नंबर की बात करें तो ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, राइट। यहाँ पे जो प्योरिटी ग्रेड है उसके ऊपर बात की जाएगी, सिल्वर लिखा जाएगा BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से, प्योरिटी ग्रेड होगा एंड HUID कोड होगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, जो प्योरिटी वेरिफिकेशन है, राइट, वो एनहेंस होती हुई हमें दिखेगी। गोल्ड की तो हम जानते ही थे, एंड अब सिल्वर की भी, सिल्वर के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, करेक्ट। एंड ये सारी चीज़ें जो HUID ये वेरिफिकेशन है फॉर सिल्वर, ये 1 सितंबर से फर्स्ट ऑफ सितंबर 2025 ये लागू होते हुए दिखेंगी। यहाँ पे प्योरिटी ग्रेड देखें 800, 835, 925, 958, 970, 990, 990, 958 एंड 999, ये नए 2 ऐड किए गए, ये भी याद रखेंगे। जो स्टैंडर्ड IS 2112 था उसको रिप्लेस करके IS 2112 ये कर दिया गया, मतलब जो 2014 वाला था उसको रिप्लेस करके 2025 वाला कर दिया गया है। एंड इवन एक मोबाइल एप्लीकेशन है BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसपे आप अपना HUID नंबर डालकर अपना गोल्ड एंड सिल्वर की जो वेरिफिकेशन है क्वालिटी की, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये स्टेप लिया गया। फिर आ जाते हैं हेल्थ AI GRN। तो इंडिया ने अभी इस हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया, जिससे हमारा जो AI है उसका हेल्थ केयर में जो यूसेज है उसके ऊपर यहाँ पर हम ओवरसाइट रख सकेंगे, उसके ऊपर हम चेक रख सकेंगे, राइट, उसके ऊपर गवर्नेंस कर सकेंगे, गाइडलाइंस ला सकेंगे। देखो AI बहुत स्ट्रांग हो गया स्टूडेंट्स। पहले के टाइम पे अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती थी तो रिसर्चर्स को ईयर्स का डाटा टाइम लग जाता था, लेकिन अब AI की मदद से ये ईयर्स का काम कुछ डेज में ही होता हुआ हमें दिखेगा, राइट। तो जो हेल्थ केयर में जो इसके यूज़ केसेस है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सारी डिजीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं AI की मदद से। तो इंडिया ने अभी हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया कि हम AI का जो यूसेज है हेल्थ केयर सेक्टर में उसके ऊपर हम गवर्नेंस ला सकें, उसके ऊपर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स ला सकें, ताकि AI का रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो सके हेल्थ केयर में, राइट, कोई उसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ ना कर सके। अगर मैं बात करूँ इंडिया, तो इंडिया ने अभी इनको ज्वाइन किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया TDK का लिथियम आयन बैटरी प्लांट हरियाणा में। देखो लिथियम आयन स्टूडेंट्स क्या होता है, लिथियम एक आपका क्रिटिकल मिनरल है, राइट। फिर इसको प्रोसेस करके लिथियम आयन बनाया जाता है। इस प्रोसेसिंग जो ये होती है इसका पूरा कब्जा ऑलमोस्ट 80 to 90% जो प्रोसेसिंग होती है ये कौन कंट्रोल करता है वर्ल्ड में? चाइना कंट्रोल करता है। ये भी एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो लिथियम हमारा मेजर सोर्स, आज हम क्यों मानते हैं लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम बैटरीज यूज़ करते हैं, राइट, एंड उस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लिथियम की ज़रूरत होती है, लिथियम आयन की ज़रूरत होती है, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली लिथियम आयन की बैटरी बनाई जाएंगी, कहाँ पे बनाई जाएंगी? सोना हरियाणा में बनाई जाएंगी एट देयर लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये TDK कॉर्पोरेशन का लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा सोना हरियाणा में। 20 करोड़ बैटरीज यहाँ पे एनुअली बनाई जाएंगी एंड 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च किया यूनिफाइड रेरा पोर्टल को न्यू दिल्ली में, राइट। ड्यूरिंग द 5th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल इसको लॉन्च किया गया एट संकल्प भवन इन न्यू दिल्ली। इससे क्या होगा, जो सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे यूनिफाई होता हुआ दिखेगा, सभी रेरा सिस्टम, सभी स्टेट्स के रेरा सिस्टम आते हुए दिखेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, राइट। जो बायर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सरकार की इन रेरा की, राइट, जिससे जो डिफॉल्ट्स होते हैं बिल्डर्स के द्वारा वो यहाँ पर कम होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। 56 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी अभी न्यू दिल्ली में एंड इसके दौरान GST 2.0 कहा जा रहा है जो रिलीज किया गया। 4 स्लैब्स होते थे स्टूडेंट्स पहले, 5, 12, 18 एंड 28। इनको हटाकर
अब सिर्फ दो स्लैब्स रखे गए हैं, 5% और 18%। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती हुई दिखेगी, प्राइस घटेंगे तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन तक पैसा पहुंचेगा एंड इट इज़ क्वाइट अ सर्कल। तो ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, राइट, हमारी इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी। ये पहली चीज़ तो होगी कि 5 और 18% स्लैब रह गए हैं। अब दूसरी चीज़ 40% का सीधा टैक्स लगेगा टोबैको प्रोडक्ट्स पे एंड लग्जरी आइटम्स पे। जो दो स्लैब्स है 5 और 18%, ये तो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, लेकिन 40% का स्लैब ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स ये भी थोड़े टाइम में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफाइन करेगी, तब ये स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। यहीं पे अगर कुछ प्रोडक्ट देखें जैसे बटर, घी, चीज़, डेयरीज, कंडेंस मिल्क, यहाँ पे 12% से 5% तक कर दिया जीएसटी। देन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, प्री पैकेज एंड लेबल छन्ना और पनीर 5% से 0% यहाँ पे इंटरेस्ट जीएसटी देखने को मिलेगा। पैकेज नमकीन्स, भुजिया, सॉसेस, पास्ता, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, ये आपका 12.5 से 18% की रेंज में होते थे, जो कि अब 5% की रेंज में आ गए हैं। वहीं पे अगर हम देखें गाड़ियाँ, स्मॉल कार्स एंड टू व्हीलर्स अंडर 350 या 28% से 18% पे रह गए, तो मतलब कार सस्ती हो जाएंगी। वहीं पे बसेस, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स एंड ऑटो पार्ट्स ये भी सस्ते होते दिखेंगे 28% से 18%। इवन टाटा मोटर्स ने कह दिया कि जो ये जीएसटी रेट कट हुआ हमारा, जो ये डिफरेंस आएगा वो उससे क्या कर दिया गया, जो कार के प्राइस है ना वो ही कम कर दिए गए हैं, राइट। इवन एसी, टेलीविजन अबव 32 इंच ये भी यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं, 28% से सीधा 18%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जीएसटी पता होने चाहिए आपको रेट्स। मूविंग ऑन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एपेक्स बॉडी है जो कि रिटेल की पेमेंट्स वगैरह को संभालती है। यूपीआई इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट। इन्होंने रेज कर दिया पर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को टू 5 लाख रुपीज एंड कम्युलेटिव लिमिट फॉर 25 आवर्स टू 10 लाख रुपीज, राइट। पहले 1 लाख रुपए होती थी, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिमिट है ना एंड एग्रीगेट लिमिट है उसको बढ़ा दिया आप, जैसे यहाँ पे इनमें पिक्चर में देख सकते हैं। इन सारे सेक्टर्स में जो एनएंस लिमिट है वो है 5 लाख रुपए की एंड जो कम्युलेटिव लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक कर दी गई है कई जगह पर। मूविंग ऑन, बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने सीबी का अप्रूवल रिसीव किया टू लॉन्च अनुराधा एसआईएफ प्लेटफॉर्म। एसआईएफ क्या है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि जो म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अभी बंधन एएमसी को रिसीव अप्रूवल मिल गया है सेबी से, ताकि अनुराधा एसआईएफ प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सके। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनके द्वारा संदीप सिक्का को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड विशाल कपूर को अपॉइंट किया गया एज द वाइस चेयरमैन। मार्क करेंगे तो एएमएफआई के कौन बन गए हैं चेयरमैन? संदीप सिक्का एंड वाइस चेयरमैन विशाल कपूर। अगर बात करें नवनीत मुनोत को, संदीप सिक्का सक्सीड करेंगे नवनीत मुनोत को एंड विशाल कपूर सक्सीड करेंगे एंथनी हेरेडिया को। ये डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द 30th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एएमएफआई। मूविंग ऑन, एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ भूपेंद्र गुप्ता एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? भूपेंद्र गुप्ता। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये सक्सीड किनको करेंगे? राज कुमार चौधरी को। मूविंग ऑन, लेवाइस, ये काफी फेमस अमेरिकन डेनिम ब्रांड है। इन्होंने आलिया भट्ट को अपॉइंट किया है एज देयर न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मार्क करेंगे। इसी के अलावा ये थर्ड इंडियन एक्टर बन गई जो कि रिप्रेजेंट करेंगी लिवाई को। इससे पहले दीपिका पादुकोण एंड दिलजीत दोसांझ को भी बनाया गया था। दिलजीत दोसांझ को तो जो सिंगर है, काफ़ी फेमस एक्टर एंड सिंगर, उनको तो अभी मार्च 2025 में अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा आलिया भट्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं लॉरियल पेरिस की एंड गुची की भी। नेक्स्ट, ऑबिट्री पर आते हैं। रिनोन इटालियन फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 91। अरमानी ब्रांड जो इन्होंने इतना बनाया था, फेमस था, बहुत ही फेमस ब्रांड है आज के टाइम पे। 1975 में इनके द्वारा इसको बनाया गया था, राइट। लग्जरी फैशन ब्रांड है अरमानी। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं। अरुंधति रॉय, इन्होंने लॉन्च किया अपना मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी इन केरला, राइट। सेंट टेरेसा कॉलेज में इसको लॉन्च किया गया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया एंड डीसी बुक्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इस इवेंट को। एंड मदर मैरी कम टू मी, ये मेमोयर है किनका? अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। नेशनल टीचर्स डे स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया 5 सितंबर को। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1962 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के एंड 1962 में ही हमने 5 सितंबर को पहली बार नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया गया था इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स।
इसी के अलावा इनको सम्मानित किया जा चुका है विद मल्टीपल अवार्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑफ मेरिट होता है 1963 में, देन भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आप यहाँ पे मदर टेरेसा को देख सकते हैं, इनका जो सिग्निफिकेंस था फॉर चैरिटेबल वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, उनके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं जिस दिन इनका निधन हुआ था, राइट। एंड 5 सितंबर को ही इनका निधन हुआ था, इसी डे को हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इनको 1979 में पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था एंड 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। इसके अलावा स्टेट न्यूज़ पे आते हैं स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है एंड नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए। ये जो नई स्कीम है ये क्या है, ये है आपकी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इंटीग्रेटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड डॉक्टर NTR वैद्या सेवा ट्रस्ट। यहाँ पे जो BPL है उनका कवरेज रहेगा 25 लाख का, APL का कवरेज रहेगा 5 लाख रुपए का, राइट। तो इसको मार्क करेंगे पहली चीज़। फिर इसमें 856 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि इंडिया में PCB प्लांट को बनाया जा सके, आंध्र प्रदेश में ये PCB प्लांट को लाया जा सके। PCB प्लांट से होगा क्या, जो PCB होता है आपका बेसिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो सके, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हो सके एंड इससे जो स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ना वो और बेटर हो सके। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इवन अमरावती को यहाँ पे एज अ ग्रीन सिटी एंड फ्यूचर सिटी के तौर पर देखा जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हमें होती हुई दिखेंगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप चलते हैं रिविजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूडाइस प्लस रिपोर्ट, जो कि FY25 एकेडमिक ईयर के द्वारा के लिए रिलीज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इनके द्वारा अभी नारी रिपोर्ट रिलीज की गई, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लिस्टेड इन द टॉप 5 सेफेस्ट इंडियन सिटीज फॉर वीमेन इन 2025 एज पर द रिपोर्ट। तो यहाँ पे भुवनेश्वर इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो कोहिमा टॉप पर आता है ऑफ नागालैंड, देन विशाखापट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश सेकंड पे, थर्ड पे भुवनेश्वर सिटी ऑफ उड़ीसा, देन ऐजवाल ऑफ मिजोरम फोर्थ पर, एंड गैंगटॉक एट 5th पोजीशन ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो ये टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज है इंडिया में। नेक्स्ट, किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि अगस्त में हुई इन फुके थाईलैंड। सो किस कंट्री को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड यहाँ पर, वो है हमारी कंट्री इंडिया। मार्क करेंगे, इंडिया करंटली होल्ड करता है द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहां पे एक इसकी थीम भी याद रखेंगे, थीम रहेगी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, mention the country with which India signed a memorandum of understanding to bolster the technical cooperation in agriculture and allied sectors including livestock. So mention the country with which India signed a memorandum of understanding, वो है भूटान। नेक्स्ट, वेयर डिड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अभी इसका पार्टिसिपेशन हुआ जहां पे 700 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो वो है इजिप्ट में, ये हमारा इवेंट हमें देखने को मिला था जहां पे 700 पर्सनल्स ने फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गोल्डमैन सैक्स को ताकि ये जो अपने डाइवेस्टमेंट करेंगे वो कर सके इन द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड ये सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर रहेंगे। किन बैंक में यहाँ पे डाई इन्वेस्टमेंट होगी, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक।
नेक्स्ट, किस टाइप का लाइसेंस ग्रांट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को बाय आरबीआई? तो पेमेंट एग्रीगेटर का ये लाइसेंस रहेगा जिससे ये मर्चेंट को पेमेंट भेज सकते हैं और उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, क्रॉस बॉर्डर नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया भारत पे के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च इंडिया का पहला ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड को विच विल ऑपरेट ऑन द रूपे नेटवर्क। तो आइडेंटिफाई द बैंक वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इशू किया गया ऑफ ईवाई इकोनॉमी वॉच जो कि ईएनवाई के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ये बताता है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर 2038 तक। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की जो इकोनॉमी हो जीडीपी होगी 34.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी एंड हम सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स एज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट इन अगस्त हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वो है अनीश दयाल। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू एनएसए अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किनको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे? डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले 5 साल के लिए। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वॉज रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर उरिजीत पटेल इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट आईएमएफ बाय एसीसी। तो यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई अगस्त के महीने में जब रॉजर बिन्नी ये 70 साल के हो गए एंड यहाँ पे रूल है कि 70 साल के होते ही आप यहाँ पे रिटायरमेंट होती है, राइट? तो किन्होंने चार्ज संभाला एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, इन अगस्त सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ऑफ जापान इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्वायर अप टू हाउ मच परसेंट पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स इन येस बैंक लिमिटेड? तो 24.99% यहाँ पे स्टेक रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड इनका ये अप्रूवल 1 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट, वेयर डिड डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का? तो वो है ओडिशा में। नेक्स्ट, इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, राइट? जहां पे पैराशूट को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा एंड जब अगर जो सेफ लैंडिंग होगी, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ड्यूरिंग द गगनयान मिशन ये टेस्ट किया गया, राइट? तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था कहां पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी 2 आईएनएस कमीशन किए गए हैं इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक है आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी। उदयगिरी की अगर हम बात करें, ये आपका सेकंड है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, राइट? प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट? एंड ये सेकंड आ जाता है यहाँ पे, हिमगिरी थर्ड आ जाता है। यहीं पे हिमगिरी को बनाया गया है किसके द्वारा? जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त 2025। सो मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है इजराइल। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडिया इन्होंने होस्ट किया एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट रहा। तो कहां पे इसको होस्ट किया गया? उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये होल्ड करते हैं रिकॉर्ड फॉर द 525 बॉल्स, जो कि मोस्ट बॉल्स इन्होंने फेस की बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट? इसी के अलावा इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में।
नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इन अगस्त 2025। सो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या है, हिमालयन किंगफिशर। आई रिपीट, ये है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। और यहाँ पे लोगो क्या रहेगा, ये तो है मैस्कॉट, लोगो क्या रहेगा, एक शिकारा एक हाउस बोट हो जाती है ऑन डल लेक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया किस स्टेट को एज द होस्ट सिटी फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड इन नवंबर 2025। तो किसको डिक्लेयर किया गया विच स्टेट एज द होस्ट सिटी, गोवा यहां पर होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट, जूलियन वेबर इन्होंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट होता है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हुआ था। इंडिया के नीरज चोपड़ा इनकी सेकंड पोजीशन रही यहां पर इस इवेंट में। जूलियन वेबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का, वेरेस जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से है इनका थ्रो था 91.57 मीटर का। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 23 अगस्त टू ऑनर द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ इसरो के कौन से मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29 अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, ध्यानचंद जी, राइट। काफी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हॉकी से ये रिलेटेड थे, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता था। एंड इस बार हमने 14th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट, और कब, 29 अगस्त को। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सन 2000 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड पहली बार जो इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 30 अगस्त 2001 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एज ऑफ अगस्त 2025? तो वो है राजेश शाह। नेक्स्ट, इन अगस्त विच टू स्टेट गवर्नमेंट्स अग्रीड टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लांटेशन ज्वाइंटली इन द डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट अलॉन्ग देयर इंटरस्टेट बॉर्डर? तो कौन सी दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज? वो है नागालैंड एंड असम के द्वारा। नेक्स्ट, as per the Ministry of Commerce and Industry, what was the value of India's seafood export in FY25? तो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? $7.45 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगस्त के महीने में एट वानखाड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो स्टेडियम का नाम क्या है? शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिसने पार्टनर किया कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च ईजेड पेंशन प्लान। तो policybazaar.com ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया बाल मित्रा कैंपेन को टू रिकनेक्ट द स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन विद फॉर्मल एजुकेशन? 16 से 14 साल के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर $100 बिलियन ट्रेड विद इंडिया इन FY25 विद इंडियाज कम्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $75 बिलियन बिटवीन 1996 टू 2024। वो है अफ्रीका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम IPL। वो है रविचंद्रन अश्विन, काफी फेमस स्पिनर हैं ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट दैट कंक्लूडेड इट्स प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑन 28 अगस्त मार्किंग 75 years of pioneering. Next is our homework section, students.
First question, which country recently joined the IBCA, International Big Cat Alliance? Second question, tell me recently Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed how many years? Third question, tell me recently no helmet, no fuel. This was implemented in which state initially, from which date? Fourth question, recently which state became the first state to implement the Supreme Court order on stray dogs? Which is that? And what was the order? Do let me know that also. Fifth question, tell me recently India UN World Food Program, they have signed a pact to supply what amount of what material for global humanitarian aid? Correct. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.